Assalamu alaikum students. Welcome to the third session of our week 14. In week 14, we were discussing about controlling process and measuring actual performance, comparing the actual performance against the standards, and taking managerial action that is about corrective actual performance. How we can, you can say, correct the actual performance. ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं इन द लास्ट सेशन. ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस और कंपनी रैंकिंग के लिए वट एवर यू आर डूइंग कंट्रोल करना इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है जो भी आप काम कर रहे हैं. टाइप्स ऑफ कंट्रोल में हमारे पास 3 मेजर टाइप्स हैं जी. दिस इज द लास्ट वन. फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, concurrent control, feedback control. These are very important, and that is linked with you can say types of control, overall types of control. And feed forward control क्या है जी? Right now we have to discuss the most desirable type of control, the forward control, that prevent the problem because it takes place before the actual activity. So that means before placing of the activity, we have to feed forward. Before the placement of the activity, we have to take the preventive action that is known as feed forward control. So for instance, when McDonald's opened its first restaurant in Moscow, what they have to do is उन्होंने रशियन फार्मर्स को डिफरेंट टेक्निक्स बताई टू ग्रो द पोटैटोज, गुड क्वालिटी पोटैटोज, एंड हाउ टू बेक द गुड क्वालिटी ब्रेड्स जस्ट टू मेक दैट यू कैन से चीज बर्गर अप टू द मार्क बनाने के लिए. So for that reason, they have to take the corrective measures before the time. So feed forward is about before the activity, you have to take the corrective measure. Concurrent control क्या होता है? As its names implies, take place while a work activity is in progress. वो फीड फॉरवर्ड है कि ऑलरेडी जो एक्टिविटी है उससे पहले काम करना. कॉन्करेंट है, साथ साथ एक्टिविटी प्लेस हो रही है और साथ साथ उसके मेजर्स आप ले रहे हैं. फीडबैक कंट्रोल ये होता है कि एक दफा एक्टिविटी होगी या उसके बाद जो उसका फीडबैक होता है, देन यू हैव टू टेक द करेक्टिव एक्शंस, फिर आप उसके लिए मेजर्स लेते हैं. तो दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, and this is what the concept is. Concurrent control, as its name implies, take place while a work activity is in progress. कब ये process होती है, कब ये place होती है? When while our work activity is in progress, जब आपके साथ साथ काम हो रहा है. The best known form of concurrent control is direct supervision. So the best known form of concurrent control is direct supervision. ये जब आप डायरेक्टली सुपरवाइज करते हैं. अनदर टर्म फॉर इट इज मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड. समटाइम्स आप साथ साथ जो है वो क्या करते हैं, डायरेक्ट सुपरवाइज कर रहे होते हैं और साथ साथ उसका कंट्रोल कर रहे होते हैं. समटाइम्स जस्ट यू वॉकिंग अराउंड इट. बीइंग अ मैनेजर, आप गो थ्रू होते हैं और देन यू हैव टू कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग, व्हिच इज व्हेन अ मैनेजर इज इन वर्क एरिया इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद एम्प्लॉयज. So directly you have to interact with the employees, just like they have given the example in table. So he's available to employees at all the time to discuss what is going on. So if someone is being a manager, that is the NVIDIA CEO example, he was available throughout the time period. So whenever a person wants to discuss something, he must be available. तो वन थिंग इज, जब आप कोई काम करवा रहे होते हैं तो बीइंग अ मैनेजर आपने उसके साथ करंटली काम करना है और देखना है. तो उसमें आप उसको ऑब्जर्व भी कर लेते हैं, उसको जज भी कर लेते हैं और उसकी वैल्यूएशन भी हो जाती है और चेक एंड बैलेंस भी रहता है. अगर आप सपोज कहें कि घर बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, समवन इज वर्किंग, तो इट्स बिट डिफिकल्ट कि आप ऑन द स्पॉट उसको इवैल्यूएट करें. सो फॉर दैट रीजन यू हैव टू वॉक अराउंड और यू हैव टू बी विद देम. Feedback control. The most popular type of control relies on feedback. In feedback control, the control takes place after the activity is done. So feedback control की अगर हम बात करते हैं तो most popular type of control rely on feedback. Generally हम ज़्यादा जो डिपेंड करते हैं वो फीडबैक पे करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू नो अबाउट डिफरेंट थिंग्स तो हम सबसे पहले उनके रिगार्डिंग मेजर्स ले लेते हैं जिसको फीड फॉरवर्ड कहते हैं. लेकिन फीडबैक कंट्रोल सबसे ज्यादा फेमस है. जब हमारे पास कोई काम हो जाता है, कोई एक्टिविटी होती है उसके रिगार्डिंग, देन वी विल take the we will get the feedback and then we have to take the corrective actions. We have to take the corrective measures. So control takes place after the activity is done. So for instance, the Denver men discovered the flawed Winston's quarters using feedback control
and the damage had already occurred, even though the organization corrected the problem once it was discovered, and the major problem with this type of control. So generally whatever has been happened, कुछ भी अगर हो गया है उसके बाद देन यू हैव टू गो फॉर इट. आप कोई भी एग्जांपल उसमें कोड कर सकते हैं. जैसे सपोज आप कहते हैं कि आपकी कोई भी आप काम कर रहे हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, और फर्स्ट यू हैव टू ऑब्जर्व कि आपकी ये वाली प्रॉब्लम जो है वो अब किस फॉर्म में जाती है, ये वाला एक्टिविटी किस फॉर्म में जाती है, और उसके बाद फिर क्या रिजल्ट आपके पास आता है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट फीडबैक देन यू हैव टू टेक द करेक्टिव एक्शन और मेजर. तो फिर आप उसको कंट्रोल करते हैं. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल. फीडबैक, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, पहले आपने करेक्टिव एक्शन लेना है. कंकरेंट कंट्रोल, साथ साथ देखते जाएंगे, साथ साथ करते जाएंगे. फीडबैक कंट्रोल, जब एक एक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है तो देन यू हैव टू गो फॉर द feedback control. So this one is about our 14th session and 14th chapter. I hope so. इसमें major आपके 3 topic ही हैं. Like this one is about overall what is controlling. Just we have to go through from all these topics. Controlling क्या है, controlling process क्या है. Controlling process में ये this one is the controlling process, 3 steps है. और last one is about managerial decisions in controlling and types of controlling. तो ये 3 से 4 आपके मेजर टॉपिक हैं दिस चैप्टर. So this is all about 14th week. I hope so everything is clear, and this is all about this video. Thank you so much, students. Good luck.